What would be your worst investment? We lost everything in 1%, one of the consumer companies we bought few years back. I mean, it became zero. And how did you tackle that? Zero का भी tension खत्म ना. Personal stock portfolio, which is, you had mentioned it is close to 3,400 crores. Now, last we have seen is about 4,000 plus. The flat, where I am living, that flat was originally allotted at 150 rupees per square foot. Today, the price is 1,50,000 rupees per square foot. 1000x. 1000x. In how many years? 46 years. 46 years. Now tell me the compounding. At what rate this 1000x would have happened? So I'll apply the rule of 72. 2 raised to 10 अगर 1000x है तो 46 years में 10 बार तो 4.6 years में डबल हो रहा है. Every 4.6 years अगर डबल हो रहा है तो 72 upon 4.6 तो 72/5 कर लेते हैं तो 15% क्या अगर होगा मेरे हिसाब से. 10 years 10 times, so 20 years 100 times. 100 times, and 30 years 1000 times, and 40 years 10,000 times, 50 years 1 lakh times, and 60 years 1 million times. If you are a small kid, you actually can do your money 1 million times. Harshad Mehta also, I think their team had approached you. Harshad bhai was nice enough to offer to do business with us. We said, boss, हम बहुत छोटे लोग हैं, अपने नहीं करने का है सब. And in hindsight, you think it was a correct decision किया था success. Hello sir, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? Very good. Very nice to see you here. Yes, nice to see you too, sir. Thank you so much for doing this. सबसे पहले आपकी चाइल्डहुड की बात करते सर. मैंने पढ़ा था कि आप when you were a kid, आप हमेशा कभी भी रेस्टोरेंट में जाते थे. You used to calculate कि कौन से कितने टेबल पे कितने लोग बैठे, ये रेस्टोरेंट का कितना रेवेन्यू होगा, कितना प्रॉफिट होगा. ये क्यूरियोसिटी और ये माइंडसेट आपका पहले से ही था. तो कैन यू टेल अस मोर स्टोरीज कि ये आया कैसे और क्या होता था? I don't know कहाँ से आया था, लेकिन नॉट चाइल्डहुड बट जब स्टूडेंट था मैं, कॉलेज का स्टूडेंट था या पर्टिकुलर सीए का स्टूडेंट बना, देन वो अकाउंट्स वगैरह जो है ना, अकाउंट्स और समझ में आया बीकॉम में. एंड एक्चुअली मैं था साइंस का स्टूडेंट टिल 11th. दैट टाइम इट वाज 11+3, सो 11 तक मेरा पीसीएम था. देन ये बीकॉम किया मैं, तो बीकॉम में मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे होता है. सो वो समझ के आने से बाद फिर धीरे धीरे जो है ना, व्हेनेवर पता नहीं एक क्यूरियोसिटी था अंदर से कि भाई ये पैसा कैसे कमाता है, हर आदमी का पैसा कैसे कमाता है, कितना कमाता है, कितना बड़ा बिजनेस होगा. वो एक क्यूरियोसिटी थी और वो मैं बैठे बैठे करते रहता था कि भाई ये रिक्शा वाला कितना कमाता होगा, ये ठेले वाला कितना कमाता होगा, ये रेस्टोरेंट वाला कितना कमाता होगा. जैसे जिस रेस्टोरेंट में मैं ब्रेकफास्ट हुआ करता था वहाँ पर हॉस्टल के बाहर रामकृष्ण था ना, राधा कृष्ण. तो राधा कृष्ण में हम देखते थे कितने टेबल्स हैं और कितने बार टर्न करेगा, कितना पर टिकट बिलिंग होगा, तो क्या उसका रेवेन्यू बनेगा. फिर वो अप्रॉक्सीमेट करके जाके फिर शाम को कभी वो मालिक से पूछने का, डू यू डू 5 लाख रुपीज़ टर्न ओवर डेली, और कितना बचता होगा, तो मार्जिन स्ट्रक्चर समझने का. तो ये सब चीज़ जो है वो तभी से चालू था. जब से सीए करना चालू किया था मैं, तब से ये क्यूरियोसिटी थी मेरे में कि बिज़नेस किसका भी वो समझने की कोशिश करो. और छोटे दिमाग रहते उस समय, कि अब उतनी बुद्धि डेवलप नहीं थी, तो आप वो छोटी चीज़ को समझ सकते हो. आप वो धीरे धीरे वहीं से चालू हुआ. राइट. तो फिर सीए क्यों चूज़ किया आपने? सीए मैं अब देखिए, मेरे यहाँ जो थे हम लोग 6 भाई थे, तो मेरी मदर बोली कि सबको अलग अलग करना है कुछ कुछ. तो किसी को डॉक्टर आया, किसी को मतलब इंजीनियर बनने का हुआ, मतलब सॉफ्टली वॉटएवर, मतलब मेरे को जो बना था बन सकता था. लेकिन मेरे घर के बाजू में एक सीए था. दैट गाय यूज्ड टू बी सूटेड बूटेड, गोइंग एवरीडे टू ऑफिस, और एकदम मतलब अलूफ फ्रॉम द काइंड ऑफ आजू बाजू किसी से बात और नहीं करता था. बट जनरली ही वॉज मेंटेनिंग द स्मार्ट लुक एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट. वी कुडंट फिगर आउट एज ए फैमिली करता क्या है. वकील समझ में आता था, बट कुछ स्पेशलाइज वकील टाइप. सो दैट पोर्टफोलियो केम टू मी, बेटा इसके जैसे बनने का. सो देन राइट फ्रॉम बिगनिंग 7th 8th से मैं बोलता था आई विल बिकम सीए, बट आई डिडंट नो व्हाट द हेल सीए मेंट, टू स्टार्ट विथ. देन इन 11th आफ्टर द पीसीएम, then I didn't get the marks. I mean, I didn't score brilliantly in 11th. Then I decided to switch to commerce and hence CA. Got it. Then the trouble started in the sense after that, because I didn't have base of costing, I didn't have base of accounting, which was to other commerce students, they're being taught in school. I was not taught in school. So that switchover was not that difficult actually. Switch over to commerce as an accounts or statistics, that was very natural. It was like more like maths. But the problem was the theory side, this all the O&M and correspondence course, ये वो अंग्रेजी आती नहीं थी, हिंदी मीडियम के थे हम, तो वो बहुत स्ट्रगल हुआ
काफ़ी स्ट्रगल हो उसके कारण। आपने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बताया था कि आपने हैंडराइटिंग की वजह से सीए इंटर में आप फेल हुए थे 4-5 बार, एंड देन उसके बाद आपने 24 की जब उम्र थी आपकी, आपने हैंडराइटिंग चेंज की एंड देन यू क्लियर्ड। तो कितना डिफिकल्ट था ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, एंड माइंडसेट कैसा था तभी फिर? सी हिंदी टू इंग्लिश द मोमेंट, सी मैं बीकॉम किया नागपुर से, तो इंग्लिश मीडियम में वहाँ ट्रांजिशन काफ़ी कुछ हो गया था। देन देयर वाज अ प्रोफेसर बोधनकर, आई यूज्ड टू टेक इंग्लिश ट्यूशन, इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर ठीक करने के लिए। मतलब अंग्रेजी को बेसिकली आपको ग्रामर ठीक हो गया तो आपका राइटिंग ठीक हो जाएगा, राइटिंग ठीक हो जाएगा तो कभी न कभी जाके आप सही अंग्रेजी बोलना चालू करोगे। सो दैट ओल्ड मैन, ही दैट टीचर, आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स आई वेंट, बट ही सेट द ग्रामर एब्सोल्युटली perfect. Every day I used to go in the afternoon and he set my grammar right. So today, despite I've been taught in Hindi medium, my grammar is perfect. And that was a real turning point for my life. And I knew my handwriting is bad, but I didn't know it is so bad that I may not pass. और 3-4 बार फेल हुआ, तब मेरे को समझ में आया यार ऐसा तकलीफ क्या है, हमको सब्जेक्ट तो पूरी समझ है। देन आई फिगर्ड आउट हैंडराइटिंग इज बैड, सो आई हैड टू चेंज, and that was the most difficult 1 year when I changed, and again I failed because I couldn't do speed writing. Next time I did speed writing with a good handwriting, and then actually मेरे को अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ जो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो। अच्छा, that's why I think my biggest asset is CA. Got it. Yeah. I can resonate to all your answers. So you met Motilal sir at RVG hostel only? I had not met him. I had seen him because he was junior. But I mean, हम फेल हुए थे तो हम मतलब घिसक रहे थे वहाँ पर, ये बंदा फटाफट पास कर गया, तो ये सब ये मैथ्स कमेटी में था ये, तो ये सब उस्ताद लोग थे, सब मैथ्स कमेटी में रहने का, एकदम खाने पीने का, मजा करने का। सो आई हैड सीन हिम by face, but I never got introduced in the hostel while we were there, because he was junior to me, so I had different friend circle. But in 85, he was, I mean, I had my brother's flat, so I was staying there, and Motilal ji came to stay in Lokhandwala as a paying guest in one of those, places. CA बनने के बाद? I mean, we became CA together in 83. I mean, I was 2 years late, he was kind of on time. So उसके बाद जो है, I went for research and all. Meanwhile, he was doing double job in the sense that he was helping his brother. तो वो अहमदाबाद में खरीदते थे स्पॉट में सब शेयर्स, जो IPO में जो शेयर आए थे, और उसको यहाँ पर बेचते थे, विच इज़ T+15। तो 4-5%, 10% का कभी गैप होता था, बिकॉज इट वॉज सो इनएफिशिएंट मार्केट सिस्टम, बिकॉज देयर वाज नो टेलीकॉम। हमें लाइक अहमदाबाद में भाव 45 रुपये चल रहा है और मुंबई में भाव 50 और 55 भी हो सकता है, इतना गैप होता था। बिकॉज समबडी हैज़ टू ट्रांसमिट द प्राइस कि इस शेयर का ये दाम हो गया है। तो क्या टेलको टिस्को जो ए ग्रुप के शेयर्स थे, उसमें तो देयर वाज टैलेक्स एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, सो मार्केट वाज अ लॉट मोर एफिशिएंट। बट इन कैश मार्केट्स typically the transmission was very, very poor, so there was a good arbitrage possibility between Ahmedabad and Mumbai, and that's what we used to tell him the prices to be given in Ahmedabad, and suddenly they will know कि हाँ यहाँ पर भाव 5-7 रुपये बढ़ गया, जाके जल्दी से खरीद लेते थे वो। सो 8-10% ऐसा कुछ भी पता नहीं कितना आर्बिट्रेज में, कभी 2%, 4%, 5%, बिकॉज ही हैज़ टू सेल नेक्स्ट डे सक्सेसफुली हियर एंड प्राइस कैन फॉल, सो दैट रिस्क ही वॉज टेकिंग। सो ही वॉज पुटिंग हिज कैपिटल एंड सेंडिंग द शेयर्स हियर, सो ही नीडेड अ ब्रोकर वेयर इन मुंबई, okay, and he was doing that job, but he had a bad experience with one of the sub brokers. उसमें पैसा लेके डूब गया, ऐसा कुछ तो भी। So he was desperately in lookout for a good broker because business was growing. I met him and we started talking about his stock. हमको दूसरा कुछ समझ में आता ही नहीं था बात करने का, and he was very happy to talk to me, and we became friends, and I started understanding what he does. I started I had a research background. I was doing research at that time, equity research. So I used to in fact I used to write IPO notes also. So I used to know all the companies which were typically IPO'd at that point of time, and those shares only used to trade in premium market. So I used to tell कि ये कंपनी अच्छी है, इसका शेयर खरीदो करके। So थोड़ा उस समय से ही रिसर्च में थोड़ा रिकमेंडेशन की बात चालू करते थे, तो मतलब अंधों में कान राजा वाली बात थी। सो उससे वो थोड़ा रिसर्च होने से दे हैड एन एज इन व्हाट टू बाय इन अहमदाबाद। हाँ, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप डेवलप होते रहा, एंड देन वी सेड लेट्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ ब्रोकरेज, बिकॉज हाई टाइम अपने पास पैसे तो है नहीं, तो बिना पैसे के मतलब कितना भी तुम्हारा होशियार हो क्या फ़ायदा।
So then we said, let's take a plunge and start the business. That's how we started Motilal Oswal. 2 bosses, 1 peon, 0 capital. And I think February 87 we started it. जस्ट इसमें कमिंग बैक, तो आपका फिर स्टॉक मार्केट जो शेयर बाजार था पूरा इंटरेस्ट, तो ये इंसिडेंट के बाद ही ऐसे इंटरेस्ट है या आप आर्टिकलशिप के टाइम में पहले से आप मैं शेयर वो बाजार में थे? भाई शेयर मार्केट तो मैं 1980 से चालू हूँ मैं. अच्छा. सी 1980 तक, सी आई वाज ऑलवेज अ रीडर. आई मीन इवन इन नागपुर एंड रायपुर एंड ऑल आई वाज रीडिंग. सो रीडिंग से क्या हो गया था कि कहीं ना कहीं जाके जो है, आई वाज द ओनली रीडर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स इन नागपुर इन 74-75. God knows what I used to read, but I used to read. 4 पेज का आता था, 4 मतलब 8 पेज का. So I used to take interest in what is happening in corporate world in whatever possible way. So when I came in Mumbai, my brother was in shipping, so he had some savings because he was working for foreign shipping company. So he used to get salary of about $40,000-50,000 or more, I think. So he had 1 or 2 lakh rupees saved. So I said, Bhai Sahab, why don't we invest in stock market, because that will give good return instead of giving for 2-3% to the State Bank of India. So that's how, with his seed money, I started looking for a broker and started learning the game. And then I got so fascinated by the whole thing, by stock market and balance sheets and company. इधर CA में पढ़ाई कर रहे थे आप, how to read the balance sheet, and इधर स्टॉक मार्केट भी आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे सब मिला के देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग 200-300 बैलेंस शीट्स ऑफ माई ओन. माई वीकेंड हॉबी बिकेम कलेक्टिंग बैलेंस शीट्स एंड रीडिंग बैलेंस शीट्स. सो आई वाज काइंड ऑफ दैट टाइम दिस डेटाबेसेस वर नॉट देयर. सो आई वाज अ रनिंग encyclopedia ऑफ 200-300 इंडियन कंपनीज. आई वुड नो. उस समय क्या था, सब लाइसेंसिंग था, तो उसमें आपका कैपेसिटी कितना है, कितने टन का आपका कैपेसिटी है, कितना आप बनाते हो, कितना व्हाट इज द रॉ मटेरियल, सब पूरा देना पड़ता था. डिस्क्लोजर वाज क्रेजी. तो वो सब उससे सब सीखते गए हम कि मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर क्या है, कैश फ्लो क्या है, बिकॉज वी वर ईजी विद दैट. ऐसे धीरे 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 मतलब, सो दैट बिकेम माई फाउंडेशन टिल अबाउट 85 or so. And फिर उसके बाद तो once I became CA, then I got into actual equity research. So I had access to the floor of the stock exchange. I was not doing Sauda, but I've never transacted anything in the stock market. Never in life. I've never bought one share in the stock market. Okay. Yeah, I've always kind of recommended, or dealing was always done by Moti. He used to ring the... He used to go to the ring, yeah, and he used to do the Sauda and all. So, but I know, I have seen how the stock market used to function, how the price was discovered, you know, on an ongoing basis as the market opens. So, वो सब मैं देखा हूँ मैं, and it was a fantastic beginning. तो इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो किसी ने आपको सिखाया नहीं शेयर मार्केट क्या होता है, तो आप खुद से ही सीखे, वो पढ़ के. पूरा पढ़. आपकी एडवाइस होगी जो यंग इन्वेस्टर्स, अगर उनको भी सीखना है तो मतलब खुद से सीख सकते हैं. अभी क्या होगा, देखिए उस समय क्या था, म्यूचुअल फंड थे नहीं, तो इस सब के बस की बात नहीं. लेकिन जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप हो या एनीबडी हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज और समथिंग, दे मस्ट बाय द स्टॉक्स. एक तो पहले रीडिंग हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको सिखाएगा कौन. आप अभी तो इंटरनेट हो गया, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट ब्लॉग्स और व्हाटएवर योर वीडियोस. 1000 वीडियोस मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, इंटरनेशनल मिलेंगे, सबको तरीके से मिलेंगे, एंड यू गाइस आर गुड इन सर्चिंग देम. तो एक तो वो अच्छा होगा कि आपके पास अभी कंटेंट है, आपको आप में क्यूरियोसिटी है क्या. भाई गूगल में जाओगे तो आपको क्यूरियोसिटी तो आपको दिखाने का ना, क्या पूछने का. वो तो बेचारा बैठा है आपको सर्व करने का, चैट जीपीटी आपको सब कुछ बताएगा, बट आपको क्वेश्चन तो आपको पंच करने का है, तो वो काम आपको करने का है. सो यू हैव टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट इन व्हाट टू पंच एंड कीप डूइंग इट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ डू यू बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू नो, एंड धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको. एक्चुअली देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ, प्राइस एंड वैल्यू. प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम. प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट. नाउ वैल्यू कैसा डिटरमिन करने का. अच्छा, खास बात क्या है, ये बाजार ऐसा है जहाँ 10 का चीज़ 100 में बिकता है और 100 का चीज़ 10 में मिलता है. आपको वैल्यू समझना जरूरी है. अच्छा, जब वैल्यू एक्चुअली समझ में आता है तो यू विल बी वेरी अलोन. फिर कोई नहीं देखा, उसके कारण तो आपको मिल रहा है ना सस्ता. कोई भी एक ऐसा आप एंगल पकड़ लिए, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, योर नॉलेज अबाउट द बिजनेस, योर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, और योर नॉलेज अबाउट द एंटरप्रेन्योर, कुछ भी एक ऐसा यूनिक चीज़ जो आपको मालूम, किसी और को नहीं मालूम है, दैट अलाउज यू टू सीक द वैल्यू इनटू अ कंपनी विच इज़
विच इज नॉट नोन टू एवरीबडी. यू आर अहेड ऑफ द क्राउड आएगा घूम फिर के. वैल्यू में चक्कर क्या है कि वैल्यू ऑफ प्राइस, जैसे वैल्यू यहाँ है, वैल्यू यहाँ है और प्राइस यहाँ है. तो यहाँ 100 रुपये का वैल्यू है, 10 रुपये का प्राइस है. अब वो 100 रुपये का वैल्यू दिख रहा है आपको. ओके, मार्केट इज ऑल्सो सीइंग, बट मार्केट इज नॉट वो, लेकिन इनविजिबली वो मार्केट वहाँ जाएगा. तो वो क्या है, यू आर अहेड ऑफ द रेस. मे बी कंपनी छोटा है, मे बी कंपनी ऑब्सक्योर, इट इज़ इन छोटा साइज है, या कुछ ना कुछ ऐसे है रीज़न जिसके कारण से उसका वैल्यू इज़ नॉट डिस्कवर्ड बाय द मार्केट एंड यू कैन सी दैट वैल्यू. अब जाके जो है ना, फिर जर्नी चालू होती है. आपने खरीद लिया, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे 2-4 लोग, आप भी बताओगे सबको जाके मैंने खरीदा, तो धीरे धीरे वैल्यू इज बीइंग डिस्कवर्ड एंड इट गोज अप टू द प्राइस. एंड एक्चुअली नॉट ओनली गोज टू द प्राइस, इट ओवरशूट्स. पहले आपको 100 रुपये का वैल्यू है, 10 रुपये का प्राइस है, वो फिर धीरे धीरे जो है वो प्राइस जो है ना 100 चलाता है और 100 का 200-300 आता है. अभी देखिए, जब एप्पल खरीदा, वन ऑफ द बिगेस्ट बेट ऑफ बफेट वाज एप्पल व्हेन ही बॉट. 12-15 का पी था, दुनिया को दिख रहा था, दुनिया को दिख रहा था. खुद हम यूज़ कर रहे थे एप्पल, ऐसा तो नहीं कि भाई अननोन चीज़ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट था. ओके, बट नोबडी हैड फेथ इन एप्पल, ये डिसरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बफेट ने खरीदा, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया. ओके, ही मेड द मैक्सिमम मनी इन दैट. अब उन्होंने बेच दिया आधा. सो नाउ क्लियरली एज पर हिज कैलकुलेशन, प्राइस हैज रीच्ड वेरी क्लोज टू द वैल्यू, और मे बी इट इज ओवरशॉट. So he has done that second exercise of booking profits. So he has sold half of it. तो ये जो बाजार का जो ये है मजा है, ये जो वैल्यू ऑफ प्राइस को ये जो समुद्र मंथन है वो कंटिन्यूस चलता रहता है. 4000 कंपनी लिस्टेड है, 4000 कंपनी में रोज ये कहानी है. 4000 कंपनी आधे या तो दे आर प्राइस इज हायर देन वैल्यू एंड अदर हाफ वैल्यू इज हायर देन प्राइस. Extent could be different. What was the first time you got your money success and कितना पैसा था, कितना अमाउंट था, आपने कब टेस्ट किया था सक्सेस? सी, स्टॉक मार्केट में पहली बार मैं ब्रदर के पैसे बताया आपको. सो ब्रदर के पैसे से आई थिंक आई बॉट एक सेमी इंडिया का कंपनी होती थी. दिस यूज्ड टू बी अ फाउंडेशन कंपनी, फाउंडेशन एक्सपर्ट. इट वाज अ सीमेंटेशन ग्रुप फ्रॉम यूके. एंड उसका ऑडिट जो है क्या ना, देयर वाज सम फॉरेन ऑडिट कंपनी. तो उसका जो ऑडिटर जो था वो मेरा रूम पार्टनर था. सो ही यूज्ड टू हैव फन गोइंग टू हांगकॉन्ग, गोइंग मतलब, एंड दे वर बीइंग ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली एज एन ऑडिटर. तो वो बताता था कहानी, तो मतलब तो एक बार बैलेंस शीट तो लेके आ, क्या है इतना मतलब ब्लू चिप बोलो तो है क्या करके. सो ही गॉट मी द बैलेंस शीट एंड आई रेड द बैलेंस शीट. देन अगेन वही वैल्यू प्राइस डिस्कवरी. सो उस समय तक तो मतलब जो समझ थी उसका आपसे लगा, वो 15 रुपये का भाव था उसका. वो इट वॉज जस्ट लिस्टेड एंड नोबडी वाज नोइंग. माई एक्सेस टू बैलेंस शीट, माई नॉलेज अबाउट द कंपनी, इट्स अ ब्लू चिप, इट्स अ ग्लोबल कंपनी, यूके कंपनी. उस समय उसका फेरा कंपनी का बहुत तूफान भी था. हाँ, सो आई रेड एंड ऑल, आई फाउंड इट मतलब डर्ट चिप, लिटरली लाइंग ऑन द काइंड ऑफ टू बी पिक्ड अप, यू नो. तो ऐसा मैं बोला कि पहला हम 500 से इसका खरीदते हैं, तो कुछ कितना 7-8 हज़ार 10 हज़ार में ऐसा कुछ खरीदे थे हमने. और वेरी क्विकली नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में इट बिकेम 45-50, यू नो. सो दैट्स हाउ द फर्स्ट ट्रेड हैपेंड. बट वेरी नेक्स्ट ट्रेड advised by a very respected consultant, you know, a gentleman who helped us understand a lot of things, but he recommended was a Kohinoor Mills, which was just on the verge of bankruptcy or all kinds of trouble. So, but then I bought it 100 and maybe sold it 70, 75 or something, the moment we realized we are into wrong counter. So, you know, and that was advised. Then I realized, boss, अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी पड़ेगी, खुद ही अपने सीखना पड़ेगा. दैट वन ट्रेड ऑफ मे बी अ लाख और समथिंग, दैट टॉट मी एवरीथिंग. बॉस, ये तो यहाँ तो जिंदगी अकेले ही है, आपको खुद को ही लड़ाई का मतलब 1 मैन आर्मी पूरा है. ये बिजनेस जो है ना 1 मैन आर्मी है. आप ही मतलब भाई कंपनी बड़ा बना लो बात अलग, बट जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें किसी और का हेल्प यू कैन आस्क, बट जजमेंट आपका होना चाहिए. हाउ मच मनी डिड यू लूज इन द सेकंड? नहीं, 10-20 हज़ार. उसमें खेलते ही मतलब था ही नहीं ना, पैसा ही था ना, वो 1-1.5 लाख 2 लाख का तो पोर्टफोलियो था.
करेक्ट। तो क्या कमा लोगे। आपने एक और इंटरव्यू में ऐसे बताया था कि जो हर्षद मेहता बुल रन हुआ था तब आपने काफ़ी पैसे कमाए थे वो दौरान भी, एंड आपका पोर्टफोलियो जैसे 0 था, फिर 0 से 30 करोड़, फिर 10 करोड़, 10 से 100 करोड़, ये स्टोरी भी काफ़ी पॉपुलर है। बट ये लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर्षद मेहता ऑल्सो, आई थिंक दैट टीम हैड अप्रोच्ड यू एंड आपने डिनाई किया था कि he was an iconic guy, and incidentally I knew his brother, and hence he made me meet him. Okay, and Harshad bhai was nice enough to be very warm and offered to do business with us, because he needed a lot of brokers to execute his trades. His trades were in multiples. We said, बॉस हम बहुत छोटे लोग हैं, बॉस अपने नहीं करने का है सब। थोड़ा सा तो था ना, मोमेंटम तो था ही उस समय, मतलब यू आर नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट वी अवॉइडेड डूइंग बिजनेस और ट्राइंग टू डू बिजनेस. वी डिडंट फॉल इनटू द ग्रीड. See, nothing. It was just a greed. I mean, if you are doing a 1 crore rupee trade every day, and he could have given you 1 crore himself, trade. और उसमें 1-1.5 लाख रुपया, पहले तो 1%, 1.5% ब्रोकरेज बनता था ना, सो लाख रुपया पर डे एक ही क्लाइंट से बन सकता था. दैट वाज अ पोटेंशियल. I mean, lakh rupees per day is like crazy amount of money at that point of time. Yeah. So that was a potential, but we said, मतलब हमारे पास resources नहीं, छोटे लोग हैं, नहीं किए. So that, yeah. And in hindsight, you think it was a correct decision? I mean, hindsight में yes. I mean, ऐसा नहीं कि that would have destroyed us or anything like that, but we could have been in trouble later on or something like that. Whatever. I mean, see, stock market में क्या है कि risk बहुत है. ये क्या पूरा पैसे से भरा हुआ है, चारों तरफ पैसा है, तो वो पैसे के आते ही सब ग्रीडी हैं, हम भी ग्रीडी हैं, क्लाइंट भी ग्रीडी है, पूरी दुनिया ग्रीडी है यहाँ पर जो आते हैं. अब उसमें क्या है, यू आर वॉकिंग थ्रू, चारों तरफ पैसा दिख रहा है, आप जो पैसा आपको नहीं बिलोंग करता, उस पैसे के लिए आप चले जाते हो. सो ऑब्वियसली यू टेक द रिस्क, इधर यू लिवरेज मोर, और यू टेक द रॉन्ग क्लाइंट, और यू डू द रॉन्ग ट्रेड, और यू डू समथिंग, एंड दैट ओपन्स द डोर फॉर द रिस्क टू एंटर योर हाउस, और फिर आके आपको धुलाई करता है बाद में. एंड लाइक दिस, वन बाय वन पीपल कीप फॉलिंग बाय द वे साइड. सो एक्चुअली आप देखेंगे रास्ता, इसमें आपको बहुत सारे ब्रिलियंट लोग आते हैं और जाते भी हैं. वेरी फ्यू सर्वाइव लॉन्ग टर्म. एंड कंपाउंडिंग टू वर्क, यू नीड टू फर्स्ट सर्वाइव. तो उसमें जो बफेट लोग का कोड है ना, टू फिनिश फर्स्ट यू हैव टू फिनिश. मतलब आपको वो फिनिश लाइन तक तो जाओ ना आप, अदरवाइज आपको तो यू आर नॉट इन द रेस. आप बहुत स्पीड से चालू किए, हाफ द रेस यू रैन, एंड वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, तो खलास हो कहानी. वॉरेन बफेट सर से ऐसे पूछा था ना कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल सब लोग कॉपी करके आपके जैसा क्यों नहीं बनते, तो वो उन्होंने बताया था, नोबडी वांट्स टू बिकम रिच स्लोली. You put it aptly. Nobody wants to be rich slowly, and he is 1 trillion at the age of 94. By 110, he will be, say, kitna, he will do at least 3 turns more. So 2 raised to power 3, art does not. हो सकता है he could be $8-10 trillion. I mean, the story will actually fly from here. When you go from $1 trillion to $2 trillion in 4 years' time, and then from 2 trillion to 4 trillion. I mean, it takes a lot to understand compounding, and I think that is he had the biggest wisdom sometime in 62, 63. कि भाई compounding is the way to go. He knew, I mean, if in his writings it is there. Compounding के बारे में बात करते, let's spend some time there. How important is the power of compounding, and लोग harness कैसे कर सकते हैं ये power of compounding को? आप examples के साथ अगर explain कर सकते हो तो. देखिए, compounding is a law of universe. Everything is compounding. The universe is compounding. Economy is compounding. Companies are compounding. Your value of investment is compounding. The whole life is about CAGR. CAGR. Okay. So how does the compounding work? Why Einstein kind of guy to say it is 8th wonder of the world? Now, how does the compounding work? In the sense that, so rule of 72. Okay. So rule of 72 means what? 72 divided by percentage gives the number of years in which it will double, and 72 divided by number of years gives you approximately the percentage will double. So 72 divided by 5 gives you 15%, or 72 divided by 15 gives you 5. This is the more total this thing. How to use it? So, if the flat where I am living, that flat was originally allotted at 150 rupees per square foot. When? 1978.
Okay. Okay. Hmm. Today the price is 1,50,000 rupees per square foot. 1000x. 1000x. In how many years? 46 years. 46 years. Now tell me the compounding. Compound annual growth rate. Yes. At what rate this 1000x would have happened? So I'll apply the rule of 72. आप करिए. So 1000x मतलब it is becoming double. 1000 is 2 raised to 10, I think. 2 raised to 9, 2 raised to 10 मान के चलते. So 2 raised to 10 अगर 1000x है तो हर 10 basically it is doubling 10 times. तो 46 years में 10 बार तो 4.6 years में डबल हो रहा है. एवरी 4.6 years अगर डबल हो रहा है तो 72/4.6 तो 72/5 कर लेते हैं. तो 15% क्या अगर होगा मेरे हिसाब से. राइट. सो दिस इज द प्रोसेस बट नोबडी डज इट. आपको क्या लगता है आपने दुनिया लूट लिया लगता है बाय बाइंग एट 150 एंड सेलिंग एट 150,000. ऐसा इससे अच्छा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? बट इट्स ओनली 15%. My index is doing 15%. So you can just buy the index and make as much as Samudramal has appreciated. But nobody knows. So now ये तो हो गया past. So it has created an understanding of how glorious was the past. You created a bridge, mental bridge. कि भाई 15 टका से बढ़ेगा तो 150 रुपये और 1.5 लाख हो जाएगा. ये आपके दिमाग में बैठ गया. अब this compounding creates bridge between 2 points of time to the present. अब आपको फ्यूचर का आपको समझने का. एवरीबडी वांट्स टू नो द फ्यूचर. वेयर द इंडेक्स विल गो. वेयर विल इंडेक्स गो. अरे किसको मालूम किधर जाएगा? जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा. बट इफ यू हैव टू मेक एन एस्टिमेट व्हाट विल यू डू? यू विल से लास्ट 40 years में इंडेक्स कितना बढ़ा है ना. 100 का भी कितना हो गया है? 80,000 बराबर. सेंसेक्स इज 82-83,000 पता नहीं इतना कितना हो ऐसा कुछ है ना. हाँ 82 से 82,000 और समथिंग रहता है. तो कितना बढ़ा? You know, again you can do the compounding. Yeah. है ना. So how many years it is? You can do it. 40 years. 44 years. हाँ. In 44 years, how many times? 800 times. Yeah. कर लीजिए आप. इसमें सेम उतने आएगा आसपास. 16-17%. एक परसेंटेज लोअर. ओके. 15% के आसपास 14.5 15% के आसपास आएगा. अब 15% से हुआ तो if I do 15% for the next whatever number of years you ask. So in how many years you double at 15%? 5 years. 5 years. Yeah. 10 years में कितना होगा? डबल मतलब डबल का डबल. Yeah. So आपका if it is 10 years 4x. 4x. Yeah. 20 years में कितना होगा? 16x. 16x. Like that. So compounded thinking बहुत जरूरी है. See, one is to understand compounding. Second is to have compounded thinking. मतलब in any see एक तो क्या आपको मालूम है. But do you think in compounded way? Because natural thinking, God has not designed you to think in compounded way. 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 टाइप. सो लोगों को जनरली पूछो ना कि 10 साल में 10 गुना तो 20 साल में क्या हुआ? 20, 30 ऐसा जवाब आता है. Nobody says in 10 years 10 times, so 20 years 100 times. 100 times, and 30 years 1000 times, and 40 years 10,000 times, 50 years 1 lakh times, and 60 years 1 million times. If you are a small kid, you actually can do your money 1 million times. 60 years तो मिलेगा आपको. आप तो सब ब्रिलियंट लोग हो. 20-22 साल में आपको रैंक चार्ट अकाउंट मिल गया. तो आप लोग इतना अच्छा फिट हो आप तो मान लो 85-90-100 तो कोई भी जिएगा ना. तो 60 years आपको कंपाउंडिंग है. आप 10-5 लाख रुपए से भी चालू करो तो कहाँ पहुंचोगे आप सोचो. आप यू कैन बीट बफेट. You know, so having that plan, so that creates compounding, creates bridge between present and future. क्योंकि हर आदमी को फ्यूचर जानने का है. एटलीस्ट फ्यूचर के प्लान तो करने का है. सो यू प्लान एट 15% और 25%, दैट इज योर कॉल, दैट इज योर कॉम्पिटेंस. सो अब मेरे को सी इफ आई डिसाइड टू ग्रो एट 25% and say in next 30 years I want to be 1000x from where I am, है ना. So I have to see to it that I conduct myself in such a way that I make 25% gain every year. Now how do I gain? If I go to the market, that is going to give me 15%. Across the portfolio, it is not going to give me some 40-50%. It is going to give me 15%. Maybe I am very smart or something like that, so it might give me another percent or two more, 16-17%. But how do I bridge that 8% gap?
That's what Motilal Oswal does. I earn in Motilal Oswal, and whatever is left out of dividend, that is being put here. So 17% I earn on my portfolio, and another 7, 8%, 10%, depending on the business time and all, it goes into the treasury. So the treasury is continuously growing at 17% or 18%, and it is also being pumped with the fresh flow of money, free cash flow. Right. So that is giving the compounding of 25%, 27%. But how far can it go? Only time will tell. Yeah. Is it reasonable to assume कि कोई young investor अगर invest करता है तो 15% एक reasonable rate of return मान के चल सकते हैं, right? That is what has been the equity or mutual funds में डाले. See, in compounding, what is important is to understand the game first. Don't draw what to do. Just first understand. कि मैं कितना क्या हो जब आपका बेस छोटा रहेगा ना, आपका कॉम्पिटेंस इज मोर देन द बेस. सी कंपाउंडिंग का पावर क्या है? एवरी 3 years 4 years द बेस चेंजेस. सी फ्रॉम 1 to 10 is also 10x. 10 to 100 is also 10x. Yeah. And 100 to 1000 is also 10x. And 1 lakh to million is also 10x. Mm-hmm. So compounding is very neutral, very democratic on that. So the base keeps changing. And base keeps changing means your effort required to go to the next base also exponentially goes up. So when you want to go from 1 to 10, you have to earn only $9. When you go from 10 to 100, you have to earn $90. Yeah. So you need that kind of opportunity in the economy, and that kind of a game you have to play. So what Charlie said, it is not only important to understand the power of compounding, what it takes to make it happen. So your job is to design the business model in such a way that that automatically takes care of the end game. See, 30 years henceforth, in 28, 29 and 30 years, you'll double. So if it is to go to 1000x, 500x will happen in last 3 years. Wow. 27th year will be 500 times, and 30th year will be 1000 times. Yeah. So I have to earn that much in those the last 3 years. You start from 1 today, but 28, 29, 30, 3 years में आपको 500 से 1000 करने का. So delta in 3 years is going to be 500. That's the challenge of Buffett now, to grow on a trillion, to go 2 trillion. हम तो बोल देंगे भैया 15 अगस्त से 5 साल में हो जाया करे. How do you invest? अभी $300 billion उसके पास जेब में पड़ा हुआ है. How do you grow that? If you go put in treasury, you get 5% only. So you have to earn that. So here he must be, day and night he must be thinking which is the elephant which he should shoot, so that it starts giving me at least 15%. Correct. Of that size. Yeah. So compounding में 2 चैलेंज है. एक तो पहला चैलेंज तो समझो आप, कुछ समझ में आ गया तो फिर भी एक बार किया जा सकता है. जैसे सीए आपने साइज कर लिया कैसे हम करेंगे करके. So then you can put that effort, study, and you can pass. This is also an CA exam. Yeah. More difficult than CA exam. No, not difficult. But for a lot of people it sounds difficult. Compounded thinking develop करना जो है ना, then you can become very exponential. See, you can cover a lot of ground early stage. Instead of growing at 15% or 25%, you grow at 45-50% initial stage. So that if you have, so residual required for 1000, I want to do 1000 in 30, at the age of 30. Okay, so if I have covered, instead of 10 in the first 10 years, if I have covered say 100 or say, so then residual required is much lesser. Correct. तो 20 में ही हो जाएगा फिर. हाँ. No, 20 में होगा नहीं, वो होगा 30 साल में ही. लेकिन then the required rate of return is going to be a lot. वो जो आपका क्रिकेट में होता है ना T20 में, required run rate. पहले ही आप, जैसे आपका second inning खेल रहे हो आप, you are chasing. So you are chasing what? Say somebody is made 200. Now required run is 10 run per over. But उसको क्या करते हैं, वो पावर प्ले हो जो होता है उसमें 6 में वो भाई लोग अंधाधुंध मारते हैं ताकि वो सब रिस्ट्रिक्टेड रहता फील्डिंग. तो उसमें जितना आपको बाउंड्री मार मुरा के जो है ना, आप जो है 6 ओवर में 100 रन बना लो आप, तो आपको आधा काम हो गया. बचा कितना? 14 ओवर. अभी 14 ओवर में आपको कितना बनाना है? 100 बनाने हैं. तो आपको 6-7 का एवरेज चाहिए फिर. So you have to have a game plan. How do I make that? So that's fun. Then it becomes a game. Right. And whether you achieve 1000 or 2000, how does it matter? You played a game in life. That's more important. No? I mean, Buffett, whether he dies with a $10 trillion net worth or whether he dies with 5, he has just played the game. Yeah. There'll be, I mean, I don't know whether in this lifetime there will be second Buffett.
राइट, नो दैट्स वेरी वेल सेड। इसमें सर जब स्टॉक्स पिक करते हैं तब आपने तो QGLP फ्रेमवर्क बहुत बार बताया हुआ है, बट आपने ये भी बताया था कि आप कुछ फैक्टर्स चेक करते हो, जैसे आपने एक पॉडकास्ट में बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच यू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है मेरे जैसा ही जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे असेस करने चाहिए, एंड इफ यू कैन गिव एग्जांपल्स बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड लाइक इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। आपने बताया भी है इन्फोसिस में आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, हीरो होंडा में भी किया है, देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज समथिंग विच इज बैक्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। तो इसमें फिर कैसे, लाइक कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? देखिए, इन्वेस्टिंग जो है ना एट वन लेवल वेरी कॉमन सेंसिकल सिंपल है। हाँ, आप चालू करें कि भाई बिजनेस इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में जाते हो, फिक्स डिपॉजिट क्या करता है, आपको कैपिटल गारंटी होता है कि भाई आपको 100 रुपये वापस मिलेगा और 5% आपको ब्याज देता है। आप वही पैसे जो है आप कोई बिजनेस में लगाओ, यदि वो 5% ही देगा तो आप क्यों बिजनेस में पैसे लगाओगे और रिस्क लोगे? वहाँ तो कैपिटल गारंटी नहीं है ना। तो आपको कम से कम से मतलब मैं बोलूँ कि भाई बिजनेस में लगा 15% चाहिए ना। यदि 5% में रिस्क फ्री मिल रहा है मेरे को, तो 10% एक्स्ट्रा तो चाहिए ना, फॉर गिविंग यू टू लूज द मनी। इफ यू डोंट डू वेल यू माइट लूज द मनी ऑल्सो, सो आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ कैपिटल। बैंक में नहीं रहता कैपिटल रिस्क। सो फॉर टेकिंग दैट रिस्क आई हैव टू अर्न एटलीस्ट 15%। अच्छा, यदि बट बिजनेस का क्या है, देयर आर 2007 का जो एक पेपर है ग्रेट गुड ग्रूसम बाय बफेट, वो इस सब आउटस्टैंडिंग पे मेरे लगता है दिस इज द बेस्ट पीस, बेस्ट 4-5 पेजेस ही हैज़ एवर रिटन, एटलीस्ट बाय माय असेसमेंट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखा है, बहुत अच्छी चीज़ बोले हैं, बट दीज 3 आर द सेमिनल। उसमें क्या बोलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ग्रेट गुड ग्रूसम। तो ग्रूसम कौन सा बिजनेस होता है? जैसे 5% आपको ब्याज मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है 2%, मतलब 100 करोड़ लगा के 2 करोड़ का नफा है। लॉस है तो वो बर्बादी है, बट प्रॉफिट है 2% का। वो रियल ट्रैप इज नॉट द लॉस, यू नो हाउ टू अवॉइड, यू विल अवॉइड दैट, बट द कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट। अब आपको ये समझ में आता है कि यार प्रॉफिट है तो तकलीफ क्या है करके, लेकिन ही इज अर्निंग ओनली 2-3%, वे बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इट्स अ मोस्ट यूजलेस बिजनेस। क्यों क्या होगा उसमें? आपको हर आदमी चाहता है कि भाई चलो मतलब मैं 1000 करोड़ लगा के मैं कमा रहा हूँ, समझ लो 20 करोड़ 30 करोड़ कमा रहा हूँ, तो आपकी क्या ख्वाहिश रहेगी? वो 25 करोड़ जो है उसको 50 करोड़ करो। तो 50 करोड़ प्रॉफिट करने के लिए क्या करोगे आप और 1000 करोड़ लगाओगे उसमें। आई मीन इट्स अ डिजास्टर वेयर इट्स अ बॉटमलेस पिट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रक्शन। ओके, सो दैट इज द बल्क ऑफ द कंपनी विच आर लिस्टेड इन द मार्केट, ग्रूसम। सो पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया 15% कमाते हो नहीं कमाते हो। मैं तो पहला देखता हूँ 15 का कमाता नहीं कमाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लीन हो सके तो अनलिवर्ड, बट लिवर्ड है तो भी चलो ठीक है। 15-17% नहीं कमाता, मेरे को बात ही नहीं करने गया जहाँ तक। तो क्या हजामतगिरी कर रहा है, क्या बिजनेस चला रहा है, क्या कर रहा है? सो फर्स्ट थिंग इज दैट, मतलब दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस आई लर्न फ्रॉम बफेट। अदरवाइज आई वॉज EPS फोकस्ड। वही आप 2% ही कमा रहे हो तो EPS ही देख रहे हैं आप। तो बाजार बहुत स्मार्ट है, बाजार को समझ है कौन सी कंपनी इज्जत है। कंपनी सिर्फ बाजार किसका कीमत लगाते है? जो कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है उसको ही तो वैल्यूएशन मिलता है ना। तो एक तो हो गया आपको बैड बिजनेस। व्हाट इज अ गुड बिजनेस? द बिजनेस विच अर्न्स मोर देन 15%, 13, 14, 15%. Then there are businesses, see bulk of the business, see करीब 2/3 of the business are gruesome. They don't earn cost of capital. They don't earn 15%. They earn maybe 5-6%, but they don't earn 15%. बहुत कम कंपनी कमाती है 15% से ऊपर सस्टेन वे। एक आध महीने कमा लेगा, लेकिन 5 साल 7 साल निकालें तो बहुत कम हो जाता है। Then 15 to 25, most of them they are good businesses. Like banks and all, they earn 17-18%. All the NBFCs and सब वो 15 से 25 के बीच कमाते हैं। फिर 20 के ऊपर चालू होता है सुपीरियर बिजनेसेस, जिसमें फ्रेंचाइजेज आते हैं। आपके ये एप्पल और गूगल, ये सब जितने टाइप के ग्लोबल, यहाँ पर एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, इतने कंज्यूमर कंपनीज हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं। नेस्ले वगैरह 100 टका कमाते हैं लोग। 100 टका आप समझो आप। सो बिजनेस इज वॉट? कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन। आपने कैपिटल साल के शुरू में डाला, कितना निकला बाहर? तो ये सब कंसेप्ट आपको मिलेंगे जब आप बफेट को पढ़ोगे। तो आप हाउ टू लुक एट अ बिजनेस, एंड इट्स कॉमन सेंस। ही डजंट टॉक सम अल्फा बीटा गामा,
He talks common. It makes sense. Capital input output machine. नाम बोलो, सीमेंट बोलो, स्टील बोलो, कंज्यूमर बोलो, कुछ अंतर नहीं पड़ता है. It's all same in the prism of profitability. मैं तुमको पैसे दिए पैसे कमाने के लिए. तू क्या करता तू जान. मैं तेरे सीमेंट बना, तेरे को समोसा बना, बट मैं 100 रुपये दिया, उसको 200 को कर दे मेरे को साल के आखिरी में. You know, so to understand fundamentally it's a good business or bad business. Bad business will never compound your money because he is compounding his money at 3%. तो आपको क्या उधार होने वाला है? आप तो उतना ही कमा सकते हो जितना बिजनेस कमा रहा है. You own part of the business, huh? So you have invested fundamentally in bad business. So you will decompound. Forget about compounding. So that's the end of the game. तो वो तो उधर जाने के नहीं, वो अंधेरी गली उधर जाने के नहीं. You know, so that is one thing I am very clear about. मैं मतलब सट्टा भी करूँगा या मतलब कभी मैंने तो मनी नहीं खरीदूँगा, मैं खराब कंपनी नहीं खरीदूँगा. मेरे मालूम है कहीं ना कहीं जाके धोखा देगा ही देगा. So buy good businesses, good and possibly great businesses, which are very few, 10, 15, 20 in any market, maybe 25. At max 50 companies are great businesses, and there will be say 200 जैसे 4,000 कंपनी लिस्टेड है, तो उसमें जब 20% मतलब समझ लो 500-600 कंपनी जो है ना गुड होगा और बाकी सब ग्रुसम. देन गुड मैनेजमेंट बैड मैनेजमेंट, वो बहुत टेंशन वाला काम है. यू नो, वो भी बफेट साहब ने समझाया कि 3 ही चीज़ देखना है आपको. आपको उसका कॉम्पिटेंस देखने का है. हाँ, कॉम्पिटेंस से मालूम पड़ता है भाई तुम 15-20% कमा रहे हो, 30% कमा रहे हो, मतलब आपको अपना धंधा मालूम है. यदि धंधा नहीं मालूम तो वो कमाई होने सवाल नहीं उठता है. आपको मालूम पड़ता है प्रोडक्ट बिक रहा है, सामने दिख रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं वापस, है ना. तो कॉम्पिटेंस इज नॉट इन डाउट. फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट से मिलते हो तो 2 चीज़ समझने का. यदि कॉम्पिटेंस अच्छा है तो 2 चीज़ समझने का है, कितना गुदा है, कितनी आग है, पैशन कितना है. और ये बात करके ही समझ आ जाएगा. वो तो बात करके समझ में आएगा. लगे रहो, चाय पीते रहो, खाना खाओ, उसके बाद प्लांट विजिट करो, वो बताते रहेगा अपना प्लान क्या क्या करने का उसको. कई लोग मरदूस होते हैं, दे आर इन द स्टेटस को मोड, मैनेजिंग, इस टाइप का. कई लोग होते हैं तोड़फोड़ होते हैं, मतलब यू कैन सी दैट. वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को इंटरव्यू करोगे. एंड देन थर्ड इज इंटीग्रिटी. इनफैक्ट मैं तो पहले इंटीग्रिटी चालू करता हूँ. ऐसे कोई चीज़ चेक करते हो आप कि जिससे 1-2 घंटे में समझ आ जाता है कि बहुत पैशनेट है. अब वो कैसा बात चलता है उस दिन, क्या मूड है, कितनी गर्मी है, सर्दी है, क्या खा पी रहे हो, किस टाइप का डिस्कशन होता है, बाजार का मूड कैसा है, इस सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. बट जनरली you see how inquisitive he is, what are his plans, how good is his understanding of his own business, you know, and does he understand the risk underlying कि ऐसे हवा में बात कर रहा है. and what is behind. एक तो बात करना आगे के लिए, दूसरा ये कि भाई आप रैंकर हो तो आप समझा सकते हो भाई कैसे ये करने करके. तो वो ऐसा इजी है रैंकर इन हिज बिजनेस. व्हाट ही हैज अचीव्ड in last 3, 4, 5 years when I'm not meeting at a crucial starting stage. I'm meeting when his turnover is 200, 300, 500 crores. So how he has conducted himself, उससे मालूम पड़ता है ना कैसे चालू किया. तो हम चालू करते दादा परदादा चालू करते हैं भाई. मतलब पहला बिजनेस आया कैसे सिस्टम में, है ना, कि मतलब दादाजी ने चालू किया था, कभी 1916 चालू किया था, फिर क्या हुआ, फिर बाबूजी आगे लेके आए 1990 तक, 1992 तक, इस टाइप पे. जनरली कितना था भैया, 5 करोड़ टर्नओवर था, 10-20 लाख रुपये प्रॉफिट था. इट वॉज ट्रबल, भाई लोग का झगड़ा हो गया, ये हो गया. देन आई गॉट इट, देन आई टुक द कंपनी फ्रॉम हियर टू हियर. देन यू सी हिज जर्नी. हम लोग को 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन के भी बच्चे आते हैं जिनके यहाँ फादर ने चालू किया था 75 में, 2009-10 तक कुछ नहीं था, या 12 तक तो नहीं था. देन बंदा आता है सब तरह से पढ़ा का अमेरिका यहाँ वहाँ से, एंड देन वो धमाल चालू करता है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्टार्टअप बाय द सेकंड गाय. So, you know, if you go and see the reputation of the guy, reputation of his father is going to be bad. But ये बंदे ने क्या किया है देखो. So we bet on the son rather than father. So वो gap रहता है. बाजार is still sitting on the chairman father. Reputation उसके हिसाब से होता है. But actually the actual transformation is done by son. So वो कई बार इस टाइप का गैप मिलता है. Right. Can you talk about your thesis on the investments that I mentioned, like AU Small Finance Bank या वैसे? हाँ, तो यही. So terrific business, terrific management, reasonable price. ये ट्रायंगल है. Okay.
तो आप जैसे हीरो मोटोकॉर्प था, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है 95 में क्या था कि तभी इट वाज अ स्कूटर मार्केट, लाइक 100% वाज अ स्कूटर मार्केट. बजाज हैड मैसिव प्रीमियम, मतलब 20,000 के स्कूटर शायद 15-20,000 रुपये प्रीमियम होता था, ऐसा था. 2-5 साल 10 साल में आपका नंबर आता था. मतलब अनहर्ड ऑफ. There was a situation, there was so much of excess demand and supply was not there because of licensing. 92 में डी लाइसेंसिंग हुआ, मोटरसाइकिल सब कंपनी आई, सब ग्लोबल जितने मोटरसाइकिल कंपनी सब आ गए यहाँ. होंडा, यामाहा, सुजुकी सब आ गए यहाँ, कावासाकी चारों आ गए. बट मोटरसाइकिल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्कूटर. High wheelbase, and it was more suited for India because of bad roads, rural roads. But takes time for you to achieve a certain level of. So in 95-96, they started making money, Hero MotoCorp, and we heard about it. And then I saw a report. I read a research report. बोला भाई जितना पहलवानी होने का दुनिया का वो सब का सब आ गए यहाँ पर. There is no global surprise left for you. So अब यहाँ कहानी बनेगी इंडिया में, मतलब वेरी कॉम्पिटिटिव कहानी बनने वाली है. और उसमें होंडा का हम कहानी सुने भाई 60% होता है ग्लोबली. Any market, they always have 60% market share. Here, their market share was 1 or 2% or maybe 5%. 80-90% was all Bajaj. So हम बोले यार इधर कहानी बनने वाली है. एक बुक पढ़ी थी हमने, वैल्यू माइग्रेशन बाय एड्रियन स्लोवेस्की. उसमें वही है कि मतलब दैट स्ट्रैटेजी, यही पावर है बुक का. तो उसमें क्या होता है, इनफैक्ट दैट बुक सर्व्ड मी मोस्ट, ये सब इवन नाउ. So the concept is of value migration is that no industry remains same ever, always. There is always a value keep shifting. So जैसे आपको टेलीकॉम है, से 30s-40s में टेलीफोन कंपनीज आई होंगी, तो till about 1995 it was a wired phone. Then somewhere the innovation came about the wireless cellular phone. तो आपका जो बातचीत करने का कम्युनिकेशन का नीड था, that was always there. It was always increasing. But with wireless, suddenly life changed. And the companies which are wired telephone company, they couldn't catch up with the wireless. So value migrated from wired to wireless. So like that, value migrated from scooter to motorcycle in India. And I could see that. And that's why, so with that concept, then we saw the company. Company was fantastically done by House of Heroes, Munjals. I mean, Brij Mohan ji was such a great man. I think one of the best industrialists India ever produced. What? So we visited the factory. We did our number crunching and all. 25-30% ROE tha. Growth was 30-35%. Available at some 10, 12, 15 P. उसका मार्केट भी ऐसे था. ऐसा कोई सस्ता, बहुत सस्ता भी था, लेकिन it was half the peg. मतलब उस समय उतना पैग और समझ नहीं था. But I could do my numbers. Compounding I was understanding. Something growing at 25%, if you can get at 12.5 P or 13 P, you are sitting in a virtual multi-bagger. But the growth should transpire. Because if you are growing at 25%, in 3 years your earnings will double. Yeah. Okay, your P multiple will go from 12 to 6 at current prices. And then if nothing happens in the market, then after 3 years, it will further go to 6 will go to 3. So markets are not that bad. And they are leaders. So market will recognize. I mean, they're running with thousands of crores of turnover. Market will recognize. So I bought at 12.5 P. Incidentally, the earnings came 30, 40, 50%. But P got re-rated to maybe 16, 17, 18 only. But I got all the earnings. There was no downside on the P side. So all the earnings came to me and they gave handsome dividend. Like for $30, I used to get 100 rupees dividend, 70 rupees dividend, like that. Wow. So, so that's how I stayed 18 years in Hero MotoCorp, from 96 to 14 or something like that. That was first good pick, and kind of I stayed there. Knowingly, it was a research. Knowingly, I was there. In between, हमने बहुत जगह आयाराम गैराम किया, सब जगह. लेकिन यहाँ पर like we made big money. Same way, Infosys, again value migration from Boston to Bengaluru, So that was ultimate value migration. And then Y2K was there. So value migration speed was like rapid. Like people wanted to do like 100% growth, 150% growth. So G is a very big factor in value creation. One is great business, great management,
and then G. जहाँ मतलब like, so if you have high quality business, I mean in the compounding, if you grow, you know, in compounding, it's very funny if you see the tables. You do compounding at 25%. In 10 years, how much you'll do? Say 10x. Okay. At the rate of 35%, what will happen? That 10x will become 20x. Yeah, rule of 72 say again. Okay. Yeah, 72, but intuitively, it doesn't hit you. So at 35% will be 20x. At 45%, what will happen? It will take time. Mine doesn't. It will be 40x. Yeah. How will the double? Yeah. Every 10% will double your outcome in 10 years. So you buy looking at say 25% growth. But who the hell knows whether it will grow at 15% or 35%? It's an execution also, na? How strong the economy will be, how strong the demand traction will be. There is no competition, export picks up. I mean, a lot of things happen in real life. You bought well. Now the story starts. The real story starts after you bought. Now the company will grow at 25% or 35%. I mean, that is where the return. I bought it at 12p for a company which is growing, potentially in my mind growing at 25%. But actually company grew at 30-35%. So my purchase was actually far cheaper than what I had imagined at that point of time. So that's the luck part. By chance, instead of 25, it grows only 15%, I'll make very mediocre money. If it grows at 25%, I'll make handsome money. But if it grows at 35, it's a lottery then. Right. For some young investor, they don't have access to these promoters and management. तो क्या कर सकते हैं? आजकल तो बहुत हो गया. कितना YouTube मिलता है. Okay. आजकल टेलीविजन में, ब्लॉग्स में, कंपनी. सी आप अपना काम करो. आप अपना अच्छा रिसर्च करोगे ना, आप कंपनी फोन भी करोगे ना. एक तो कौन कॉल होता है. You can directly come in and ask questions. But जो आजकल इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर होता है, उसको वो he is looking for people like you, the guy who has done research and who is asking sharp questions. क्योंकि वो भी उससे सीखता है. So he will entertain you. अच्छा, आप यदि बहुत क्यूरियस हो, छोटा इन्वेस्टर हो, you will get opportunity to meet the management also. कहीं कहीं मिलेगा आपको. इतना इम्पॉसिबल नहीं है. उस समय बल्कि बहुत डिफिकल्ट था. पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था. अभी तो क्या जबरदस्त एक्सेस है आपको. कंपनी बड़ी हो गई. कंपनी भी आपको हर छोटी छोटी कंपनी का आप क्वार्टरली डेक देखो, आप क्या प्रेजेंटेशन होता है. सो इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द कंपनी साइड इज ऑल्सो. लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा. एंड मेहनत कैसे करोगे आप जब तक आपका ग्राउंड वर्क ठीक नहीं है. जैसे आप यदि CA नहीं हो, आपने कैश फ्लो नहीं किया है, रिकंसिलेशन नहीं किया है, तो बनाओ कैसे आप. तो पहले तो फ्रेमवर्क तो आना चाहिए ना आपको कि भाई हाउ टू रिकंसाइल बैलेंस शीट, हाउ टू रिकंसाइल अ बैंक स्टेटमेंट. दैट कंसेप्ट वंस यू लर्न, then doing it is easier मतलब then only you can do it. So knowing concept of value, वो बहुत जरूरी पहला. And then you start finding the relevant companies. Right, fair. What would be your best and worst investment? And best तो क्या अभी भी yet to come. Okay. Because best in terms of speed was of course Bharti. I mean in 2.5 years it was 50x types. You know, and with research, see, one is that completely lucky strike कि भाई आपने खरीदा कुछ और हो कुछ और गया. वो that's not, I would not. But actually you bought with proper research, understanding, meeting the management, doing your, and then actually the rocket goes off. That was Hero was first one. I think Infosys was second. Third was Bharti. But Bharti I had a lot of fun because everybody was against it. Infosys तो फिर भी it was very popular. I was actually behind the curve a little bit. My friends were ahead, but Bharti I was way ahead because again I had read another book, Power of Network Businesses, where winner takes it all. You have to keep picking up concepts from the books and fitting that concept, find a business and then see what is happening in the business. And worst investment? Worst investment, of course, we lost everything in Manpasand, one of the consumer companies we bought few years back. We lost everything. I mean, it became zero. And how did you tackle that? Zero होगा फिर टेंशन खत्म ना. बचा क्या? मतलब 2-4 रुपये पे गया. I mean, we cleaned it up.
But ठीक है, मतलब it's not. I mean, I don't have any bad feeling. It's part of the equity investing. But was it like a setback for you at that time? No. It's a part of life. I mean, you have 25, 30 stocks. One of the stock is tanked. ठीक है. 5% becomes zero. So my return instead of 30% would be 27% or 24%. Okay. And your personal portfolio you've compounded at 25% to 30%, right? Now we need to do the numbers again, but it must have done about that much. Now in between 2-3 years were a little tough, but I think if you do right from beginning, I don't know from where to start, but we must have done 25%. Got it. And like this would be the personal stock portfolio, which is different from the corporate company's one. And you had mentioned it is close to 3,400 crores. Now last we have seen is about 4,000 plus. Okay. Got it. So it's a scaling, so compounding when you do, it depends. I mean, like if you do 3 years back, then compounding would work out to be say 21%, 20%. Today you do the compounding, it works out 26, 27%. Yeah. So it depends on high of the market and low of the market. Right. And this is a popular question which Peter Thiel also asks a lot of people. What is one thing that very few people agree with you on, like a contrarian bet kind of a thing? He asks like people because like just tries to understand, because a lot of startup founders become successful because they have taken some contrarian bet कि लोगों को लगा था ये नहीं होगा, but किसी को लगा था कि ये सच होगा, जैसे आपने भारती का बताया example. So is there any other contrarian bet that have worked for you in your life? One thing I find very funny is the understanding of compounding. Very few understand, and of the few, very few practice it. Few of the few practice, so you can imagine. But you can't even get 1 out of 100. And yet it is so easy. It is so easy. It should be part of life. I don't find it being part of life. And that throws a lot of opportunity in the market. And that brings a lot of peace in the mind. See, when market goes down, we know, it's part of the life. Today it is 100, tomorrow it will be 98, day after it will be 102, then it will be again 100, and then it will be 105. But I know it will take 5 years to double, or 4 years to double at 18%. So I am pretty peaceful. It doesn't, I mean, in normal correction of the market, it just doesn't kind of impact me. Because I know I'm on the compounding machine. The machine will take me forward. I have to do what my part, that is investing or allocating capital, that I have done. After that, it's all the compounding. So if you don't have faith in compounding, or you don't know the power of compounding, then you are always grabbing. I mean, can the index go to, can the Sensex go to 1,50,000? I said, it's done. 5 years, बहुत 6 साल और क्या होगा? हो सकता 4 साल में हो जाए. But it's not that I have extra insight into the future. It is just that I have confidence in the 40 years of what I have seen. When I bought a stock 100, it is 82,000. What? I mean, it is going to be like that only. Because multiple forces are working to make this happen. Right. Last question, sir. This is a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Raamdeo Agrawal, what is one question you would like to ask him towards the end of the interview? I don't know, but I think how much money people are going to make. I think this market cap, which is about 465, 470 lakh crores, which is about 5 trillion. I think we are going to see some magical number. Maybe, I mean, in our lifetime, in next 10 years, 15 years, we could see literally 10, 15, 20 trillion dollar kind of market. It's a mother of all the markets. Mother of all the bull markets. I mean, I don't have that much knowledge of US markets. It's a very powerful country. But this is once in a lifetime opportunity. Next 10, 15 years in India. So everyone should be invested in India and the Indian growth story. India growth story is once in a lifetime growth story. Like what happened in Japan and all in 70s, 80s and all. This is the moment for India. 2004 to 7 भी एक rally का period आया. That was a global rally. Everybody flew. Everybody was in the same boat. Not now. China last 10 is negative. We have 4x. So that's the fundamental difference. I mean, that opportunity, it is that time for India.
For the economy to do well, on which I don't have much say, we'll do average whatever we are going to do, 6, 7, 8%, whatever. But what is going to happen because of the retail participation? It will have multi-tier effect. One in the market, then in the real economy. So this is the golden period of Indian economy and hence Indian stock market also. Right. Thank you so much, sir, for your time. I had a pleasure talking to you. I'm sure people are going to find it very insightful. Thank you so much for doing this. Thanks. Thank you. I hope आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो I request you to share this video with at least one friend you know so that they also can get a lot of insights from this. And please let us know कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, and आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, and what kind of questions you want us to ask all these guests so that we give you the most possible value in the shortest amount of time. Thank you so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.